human rights lawyer and activist. So many of those who have been incarcerated in prison, and there are large numbers of such people who have false cases on them. So I represent some of them. There are many of them who have UAPA on them. I think Bastar must have the largest number of UAPA cases in the country, and CSPSA and so on. So I represent some of them in court. Besides that, I work as a human rights activist. So in Bastar, as we know, there is a war going on between the CPI Maoists and the Indian state. Now, since early 2024, we see that this war has intensified. Amit Shah came to Bastar. This was just before January 2024. And that time, in an interview, he said, and he has repeated it again recently, that the Maoists will be wiped out by March 2026. So now, what we are seeing is that already a place with a large majority of people who are Adivasis, since 2005, there has been a very uh, constant counterinsurgency that has been going on there. Bastar today is the most militarized zone in the country. It is said that there are more than 1 lakh paramilitary on the ground. And right now, the situation in Bastar is that they are increasing the number of camps almost every other day. So, till a few months ago, the number of camps was around 142, but I think by now it must be easily, 180 or 200. I don't know, but a very large number of camps. There are some parts, like in Sukma district, in Dantewada district, in Bijapur district, where literally every 2-3 kilometers you have a paramilitary camp. Besides the CRPF, you have very many different forces functioning in Bastar. The local Adivasis have also been taken in many different forces, like the Bastar Fighters, the Bastar Battalion, and the District Reserve Guards, 50% of which is made up of surrendered militants. So, right now, since January 2024, we are seeing a spate of encounters, which I said there were always encounters here, but the situation has now worsened. There are The frequency has worsened, and there are a lot of fake encounters. So much so that every time you go and you investigate one and you come back home and you think of writing something on it, you have barely begun when there's news of another fake encounter. So right now the situation is very bad. This is combined with Adivasis being picked up in large numbers. There's I'm a human rights lawyer, so there's constantly I keep getting news of from people to help them. People who call you to say that 17 people have been picked up here, 20 have been picked up, like, so अलग अलग जगह से you keep getting these phone calls. कहने को ये पूरा माओवादियों के खिलाफ ये अभियान है, कुछ हद तक जरूर ये माओवादियों के खिलाफ है, मगर हमको ये भी दिखता है कि साथ साथ में सरकार ने 5th शेड्यूल के अंदर पैसा कानून होता है, पैसा कानून का पूरी तरह से उन्होंने हनन किया है. पैसा कानून ये कहता है कि आदिवासियों से उनकी जमीन या उनके एरिया में, उनके गांव के एरिया में कोई भी लैंड जब एलिनेट होता है, पब्लिक पर्पस के लिए भी अगर हो रहा हो, तो भी आपको उनको कंसल्ट करना है. ये 5th शेड्यूल एरिया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मगर इसका सरकार कुछ पालन नहीं करती है. और दूसरी तरफ माइनिंग कंपनीज को ला रहे हैं यहाँ पर, और उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. लोगों को नहीं बताते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ में MOU साइन हुआ है, कौन सी कंपनी को कितनी जमीन दी जा रही है, एंड सो ऑन. सो आदिवासी लोग जिनके लिए उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज, इसी पर तो वो आधारित रहते हैं, इसी पर उनका जीवन टिका हुआ है. तो ऐसे लोग जो
अंग्रेजों के राज में भी उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए विरोध किया। आज भी वो स्वतंत्र भारत में उसी जल जंगल जमीन के लिए विरोध करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनके विरोध को दबाया जा रहा है। हालांकि हथियारबंद संघर्ष वालों को तो दबा ही रहे हैं, मगर जो खुले संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाल में 2021 में एक संगठन बना था आदिवासी युवाओं का, जिसका नाम है मूलवासी बचाओ मंच। ये 2021 में सिलगिर नाम के एक गांव बीजापुर में बना था, क्योंकि वहां पे भी ओवरनाइट एक कैंप आ गया था गांव के ही परिवार की जमीन पर। लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और सामने से उन्होंने गोली चला दी। ये सभी जो जनता थी पूरी तरह से निहत्थी थी और उसमें 3 लोग मारे गए थे, बहुत लोग जख्मी हुए थे। जो जख्मी हुए उनमें से भी एक प्रेग्नेंट औरत बाद में मर गई। तो उनको और उनके बच्चे को गिने तो हम कुल मिला के 5 मारे गए और आज दिन तक उसमें कोई भी न्याय नहीं मिला है। तो मूलवासी बचाओ मंच को अभी हाल में 18 नवंबर को मूलवासी बचाओ मंच को प्रतिबंध लगा दिया गया है छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और ऐसा क्यों किया है, तो इसमें तो वी कैन ओनली understand that it is because the government does not want any dissent or protest of any kind, any resistance at all. So, this is the way in Bastar, democracy is shrinking very fast. Democratic spaces are shrinking very fast. There is a inroad of private corporate power with full support of the government. And police and the paramilitary is being used to protect their interests rather than to protect the lives and the rights of the others.